स्टार्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बेटा स्क्रू गेज। आई होप एवरीवन नोस दिस स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का और एक नाम क्या है बेटा? स्क्रू गेज इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर माइक्रोमीटर। इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रोमीटर। चलिए, the first thing what you need to remember in the screw gauge is roughly इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो बेटा, ये यू शेप्ड वायर होगा ऐसा कुछ, और यहाँ पर थ्रेडिंग वाला एक छोटा सा स्टॉप रहता ऐसा। देयर विल बी अ स्मॉल रॉड राइट नाउ, और यहाँ पर एक रॉड वगैरह रहेगा, एंड इसके ऊपर दिस विल बी अ थ्रेडिंग्स हियर राइट नाउ। ठीक है, एंड दिस विल बी अ थ्रेडिंग्स ऑन दिस वन, एंड हियर देयर विल बी अ स्केल। रफ कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल रहता है बेटा ऐसा। ठीक है, एंड हियर देयर विल बी अ सर्कुलर स्केल, और यहाँ पर एक रीडिंग रहती। रीडिंग आई एम राइटिंग इट विथ योर सिंबल, दिस इज योर 0। ठीक है ना, और यहाँ पर जो स्केल रीडिंग रहती है ना, यहाँ पर देखो वर्टिकली, दिस इज सर्कुलर स्केल मान के चलो। यहाँ से यहाँ तक हो गया सर्कुलर स्केल, और ये हो गया लीनियर स्केल यहाँ से यहाँ तक। सो लीनियर स्केल के ऊपर भी एक रीडिंग रहती है बेसिकली, स्टार्टिंग विथ योर सम 0 पार्टिकुलेशन। इसके बाद इसके बाद रीडिंग रहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब कुछ। और सर्कुलर पाथ पे भी रीडिंग रहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, एंड दिस विल बी 1 2 3। 0 से होगा 100 होगा तो नीचे 99 रहेगा बेटा। अगर 50 रह गया तो 0 से लेके 1 होगा, यहाँ पर नीचे 49 होगा बेसिकली। ठीक है ना, एंड देयर विल बी अ थ्रेड इन दिस वन राइट नाउ। तो यहाँ पर अगर मैं रफली देखूं, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा होगा, एंड यहाँ पर एक छोटा सा रॉड होगा, और ये थ्रेडिंग उसके ऊपर ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर थ्रेड्स रहेंगे। डन बेटा, इसका नेमिंग देख लो जल्दी से। ये अपना स्क्रू है, ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज ऑफ योर पिच। ओके, जिसको हम लोग मेन स्केल भी बोलते हैं, which is also called as of your main scale, very important। और ये वाला जो होता है बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू योर सर्कुलर स्केल। ये वाला जो रीडिंग है, दिस इज योर सर्कुलर स्केल रिप्रेजेंटेड बाय CS। जो वर्नियर स्केल का रोल होता है ना, यहाँ पर सर्कुलर स्केल यूज करेगा बेटा, isn't it? These are the basic things you need to remember in this one। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो याद रखना है इसके अंदर, अभी बहुत सारी चीजें हैं वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं रफली आपको प्रॉब्लम्स करने के लिए बता रहा हूँ। तो पहला वाला जो टर्म आपको याद रखना है पिच, जैसा मैंने बोला इट इज मेन स्केल रीडिंग देगा। पिच ऑलवेज गिव्स मी योर मेन स्केल रीडिंग। पिच जैसा होता है क्रिकेट मैच के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 विकेट्स, वैसे ही यहाँ पर भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड एज ऑफ योर पिच। ये वाला 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू योर पिच।
वो कब रोटेट करेगा? सर्कुलर टर्न को पूरा एक बार मैं रोटेट करूं बेसिकली, एक बार पूरा अगर मैं कंप्लीटली रोटेट करूं ना, देन वन डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस मूव करेगा, द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ऑफ योर पिच पार्टिकुलेशन। यानी जैसा मान के चलो, कैन राइट द डेफिनेशन फॉर दिस वन, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive threads, टू consecutive threads, ठीक है ना? मतलब ये कब होगा? एक बार ये जो सर्कुलर स्केल है ना बेटा, ये जो सर्कुलर स्केल लिखा है ना मैंने यहाँ पर, इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक बार अगर मैं रोटेट करूं, यानी 0 से लेके 100 तक या 0 से लेके 50 तक एक बार अगर मैं पूरा फिरा हूं, तो ये जो डिस्टेंस मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ऑफ योर पिच। सो आई कैन से दैट वन मोर पॉइंट ऑफ द अदर लीजिए, दिस इज योर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, distance moved by your screw due to one complete rotation, due to one complete rotation, ठीक है ना? am I clear? So pitch will always be equal to how much beta? Roughly याद रख लो, pitch will always be equal to 1 msd, pitch will always be equal to your 1 msd, clear? चलो इसके अंदर लीस्ट काउंट निकालने का तरीका देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू रिमेंबर इट। लीस्ट काउंट ऑफ योर स्क्रू गेज is always equals to your pitch यानी main scale divided by number of your circular scale divisions, number of your circular scale divisions, this will be your pitch. So least count is equals to your pitch divided by your number of circular divisions. Clear beta? क्लियर है? स्क्रू गेज में लिस्ट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन, सो दैट विल गिव मी ऑलवेज द पिच। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस रिलेशन राइट नाउ। क्लियर है? चलिए तो इसकी रीडिंग निकालने का तरीका देखो, इसकी रीडिंग कैसे निकालेगी? रीडिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल की जो रीडिंग रहेगी ना दैट वाला प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ओके? मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या बेटा? यानी ये जो पिच दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल पे, ये वाला, इसके सामने जितनी भी रीडिंग आपको दिखाई देगी यहाँ पर, दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग। यानी सर्कुलर स्केल के पहले जो भी आपको रीडिंग यहाँ पर दिखाई देगी ना, यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई देगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब क्या? लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स व्हिच हैव बीन कोइंसाइडिंग विद द बेसलाइन, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर, क्लियर है? मेन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर बेसलाइन स्केल बेटा। मेन स्केल जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, मेन स्केल जो भी होता है बेसिकली, दैट मेन स्केल इज कंप्लीटली आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर बेसलाइन। क्लियर? चलो रीडिंग निकालने का तरीका, मेन स्केल रीडिंग प्लेस ऑफ योर सर्कुलर स्केल रीडिंग, रीडिंग इज इक्वल्स टू योर मेन स्केल रीडिंग प्लेस ऑफ योर सर्कुलर स्केल के ऊपर जो रीडिंग रहेगी ना, दैट विल गिव मी द कंडीशन। क्लियर है? ठीक है ना? मैं आपको रफली बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल पे जो लाइन था ना ये वाला, और इसके बाद सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन था ऐसा वाला, इसलिए, और इसमें जो रीडिंग आपको कोइंसाइड होगी ना वो अपन को लेना है। मान के चलो यहाँ पर कुछ रीडिंग है मेरे पास, लाइक से 2 सेंटीमीटर, isn't it? Like 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. उसके बाद 1, 2, यहाँ पर 3। उसके बाद सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग आपको रहेगी बेसिकली, मान के चलो यहाँ पर जो कोइंसाइड हो रहा है बेसिकली, जो भी रीडिंग कोइंसाइड हो रही है, लाइक से मान के चलो से पहले यहाँ पर कुछ रीडिंग्स है, ये मान के चलो सम 15 है,
16, 17, 18. This is your 18, which has been exactly coinciding with your baseline. ये हो गया baseline. या main scale भी बोल सकते हैं इसको. This one is called as of your main scale. And this will be called as of your circular scale. This will be your circular scale. ठीक है ना? Am I clear? Am I clear? तो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने का देखो तरीका. सर्कुलर स्केल रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर जो भी लीस्ट काउंट देगा दैट वन मल्टीप्लाइड विथ योर कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ योर सर्कुलर स्केल with your baseline that will give me the circular reading. Am I clear? Am I clear beta? ठीक है. So this is the way how do we calculate the reading. Reading is equals to main scale reading plus of your circular scale reading. Okay. सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब क्या हो जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ योर सर्कुलर स्केल विद योर बेसलाइन. यानी देखो यहाँ पर लीस्ट काउंट कुछ दे दिया होगा प्रॉब्लम में जो भी दे रखा और उससे कोइंसाइडिंग जो हो रहा राइट नाउ फॉर मी दैट वैल्यू यू नीड टू राइट. अगर ये 2 है ये हो गया राइट नाउ से मान के चलो जो भी वैल्यू दे रहेगा दैट वैल्यू वी नीड टू राइट इट ऑफ. ठीक है ना? लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन. जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. मान के चलो 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल. कितने? 2. सर्कुलर स्केल ऑफ ए gauge covers a distance of your 1 mm. Covers a distance of your 1 mm on your scale. ठीक है ना? The question is the total number of divisions. The total number of divisions. ये भी दे रखा है प्रॉब्लम में. The total number of divisions on your circular scale. On your circular scale is 50. ठीक है. The question is find least count. Find the least count. चलो ट्राई करो एक बार. कितने बार रोटेट करना पड़ रहा मुझे? 2 बार. 2 फुल टर्न्स ऑन द सर्कुलर स्केल. यानी ये जो सर्कुलर स्केल है ना इसको मैंने 2 बार घुमाया पूरा. एक बार फिर 2 बार. सो इफ आई रोटेटेड इट बाय 2 टाइम्स isn't it? कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा? 1 mm ऑन द स्केल. और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन कितना दे रखा है? 50. सो फाइंड एज द लीस्ट काउंट इज पूछ रहा है. तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मुझे मालूम है स्क्रू गेज में. लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ योर सर्कुलर स्केल डिविजन्स. पिच कितना है मेरे पास? व्हाट इज द पिच राइट नाउ फॉर मी? कितने रोटेशंस लिया बेटा यहाँ पर? 2 रोटेशंस. Isn't it? So 2 full turns on a circular scale of a screw gauge covers a distance of how much for me? 1 mm. है कि नहीं? यानी 2 बार रोटेट करने से 2 रोटेशंस करने से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? ये 1 mm का डिस्टेंस ट्रैवल करा. तो एक रोटेशन में कितना ट्रैवल क्या होगा? एक रोटेशन में इट माइट हैव बीन ट्रैवल्ड 1/2 mm. 1/2 mm मतलब 0.5 mm. दिस इज योर पिच. Am I clear? So the pitch will be equal to 0.5 mm divided by number of circular scale divisions कितने हैं बेटा राइट नाउ? 50 है. एक बार रोटेट करे तो 50 है तो 2 into 50. 2 बार रोटेट करे ना तो 2 into 50 लिखते हैं. So this will be equal to how much for me बेटा? 0.5 divided by this will be equal to your how much for me? सर्कुलर स्केल में कितने राइट नाउ फॉर मी? 50 डिविजन्स है ना? Isn't it? The total number of divisions on the circular scale is right now for me 50. And ये हो गया 100. Number of circular, sorry, ये तो उतना ही दे रखा है ना 20, 50 ही circular scale divisions है. So it is your 50. यानी this is 0.5 divided by your 50. मतलब this will be equal to 0.5 मतलब 1/2. 1/2 into your 50. Then
कितना बना बेटा? That will be equal to 0.01 mm. आ गया? हाँ, 0.01 mm. वेरी गुड. क्लियर है ना? चलो, उसके बाद जीरो एरर. जीरो एरर, ठीक है ना? एक बार मैं इसका रफली डायग्राम बता देता हूं मैं आपको. गेज कर देता हूं. हाँ, ये वाला. This is a rough diagram of a screw gauge, isn't it? This is the pitch scale, isn't it? ये हो गया स्क्रू, ये हो गया स्टड, ये हो गया टिम्बल, ये हो गया सर्कुलर स्केल, रैचेट. ये सर्कुलर स्केल है. क्लियर? So what is the basic principle involved in this one? एक बार देख लीजिए. By rotating the screw head, we get the linear distance. We get the linear movement of your main scale, which is nothing but what? The horizontal distance moved by the screw in one complete rotation is called as of your pitch. So pitch is equal to how much will be distance moved by the screw divided by number of full rotations on your screw. Least count कैसे निकालेंगे? The least count of a screw is defined as what for me? The distance moved by the tip of the screw when turned through one division of the circular scale. तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजंस. क्वेश्चन देखो एक बार. ये भी करे सो क्वेश्चन है. इफ द स्क्रू मूव्स बाय 1 mm in two rotations and its circular scale has 500 divisions, then find the pitch and the least count of the screw gauge. Screw moves by how much better? 1 mm in two rotations of circular scale. Circular scale has how many rotations right now for me? 500 divisions है इसके अंदर. तो यहाँ पर so this is having 500. हम लोग तो इससे पहले 50 लिए थे. So now the next question is in this one, pitch and least count निकालना है. Pitch का तो फॉर्मूला मालूम है. Pitch of the screw is distance moved by the screw divided by total number of rotations. Least count will be equal to pitch divided by number of circular scale divisions. तो pitch of the screw कितना हो गया? 1 mm divided by 2 यानी 0.5. तो least count is 0.5 divided by 500. So the least count will be equal to how much for me? 0.001 mm. Clear? चलो, रीडिंग निकालने का भी तरीका बताया था मैंने. रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ योर सर्कुलर स्केल रीडिंग, और रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर द हेड ऑफ द सर्कुलर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन. दैट विल गिव मी द रीडिंग. ठीक है ना? जीरो एरर देख लीजिए बेटा. देखो, अगर ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर दोनों जीरो जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, then there will be no error in that one. If the zero of the circular scale does not coincide with the baseline, when the spindle and stud are touching each other, then it is said to be a zero error in the screw gauge. अब इसके अंदर दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो there is no error in that one. अब ये वाला डायग्राम में देखो थोड़ा राइट नाउ. ये वाला डायग्राम अगर आप डिटेल में देखोगे, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल यहाँ पर है, जीरो ऑफ द मेन स्केल यहाँ पर है. यानी जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल मेन स्केल से नीचे है, इसलिए तो वैसे वाले कंडीशन में दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फॉर मी? पॉजिटिव एरर. यानी उतना नेगेटिव है तो नीचे रह गया तो हम लोग को पॉजिटिव एरर है ना, उतना वाला अपने को ऐड करना है. सो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग करना है. अब ये वाला डायग्राम में देखो उसी तरह से. अब बेसिकली if you see right now here, zero of the main scale है and this is the zero of your circular scale. Zero of the circular scale is ahead of your base scale. इसको base बोलते हैं बेटा, इसको baseline बोलते हैं, इसको baseline बोलते हैं main scale. Then that is called as of your negative error. तो बात समझ में आई? अगर सर्कुलर स्केल का रीडिंग जीरो नीचे है दैट इज पॉजिटिव. अगर सर्कुलर स्केल का जीरो अगर बेस से ऊपर है दैट विल बी इक्वल टू योर नेगेटिव एरर. ठीक है ना? हमें क्लियर? चलो मैं इसको लिख के करा देता हूँ थोड़ा. लिखता हूँ. Roughly you'll get an idea. इसको देखो, जीरो एरर में अगर दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं बेसिकली, फर्स्ट वाला इज राइट नाउ फॉर मी पॉजिटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर. कब पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे बेटा? अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल से नीचे है, isn't it?
मान के चलो ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। सर्कुलर स्केल का ये वाला रीडिंग है और ये वाला रीडिंग है, ये वाला रीडिंग है मेन का, और ये वाला रीडिंग है मान के चलो 5, दिस इज 4 2 3, और यहाँ पर 0, ऐसा कुछ। The circular scale का 0 main scale से नीचे है, that is called as of your positive. So when 0 of the circular scale is below the baseline before measurement, it is called as of your positive 0 error. तो positive 0 error कैसे निकालेंगे बेटा? Positive 0 error is equals to least count into your coinciding division of circular scale before measurement. Before measurement is called as of your positive 0 error. Am I clear with this one? उसी तरह से नेगेटिव निकालना है, नंबर 2, नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर मतलब क्या बेटा? अगर ये सर्कुलर स्केल है और ये वाला बेस लाइन है, अगर 0 ऑफ द मेन स्केल ऊपर है और इसके बाकी के नीचे यहाँ पर कुछ कोइंसाइड हो रहा है, मान के चलो दिस इज 3 कोइंसाइडिंग, दिस इज 0 ऑफ योर मेन स्केल, ठीक है ना। So what is the condition? 0 of the circular scale is above the base of the main scale, then that will be called as of what? Negative error. So negative 0 error will be equal to, say, minus of your least count into your coinciding division. यहाँ पर कौन कौन coincide हो रहा है बेटा? 3 coincide हो रहा है, division of your circular scale before measurement. That will give me the negative error. Am I clear? Am I clear बेटा? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, वही लिख रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए सभी लोग जल्दी से रफ पेपर ले लेके। स्टूडेंट measured the diameter of a small steel ball using screw gauge of least count 0.001 centimeter, ठीक है ना। The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale, 0 of your circular scale coincides with 25 divisions above the reference level, यानी बेस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। If screw gauge has zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball will be, the correct diameter of ball is, चलो ट्राई करो जल्दी से। एक ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। The student measures the diameter of the small steel ball using the screw gauge of least count of 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of the circular scale coincides with 25 divisions above the reference level. The screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter. The correct diameter of the ball will be equal to your how much? यानी इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो बेस लाइन रेफरेंस लाइन पे है ना, रेफरेंस लाइन पे जो कोइंसाइड हो रहा है वो कितना कोइंसाइड हो रहा है बेटा? 25, और 0 यहाँ पर कहीं पर है सर्कुलर स्केल का। अगर 0 ऊपर है रेफरेंस है तो मैंने अभी बताया था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव एरर करेंगे, तो नेगेटिव एरर इज ऑलवेज बीन सबट्रैक्टेड, यानी माइनस करना है बेसिकली, ठीक है ना। कितना आएगा बताइए जल्दी से, रीडिंग निकालना है यानी डायमीटर निकालना है अपने।
डायमीटर, करेक्ट रीडिंग ऑफ द बॉल मतलब क्या, डायमीटर निकालना है बेसिकली। इसका लीस्ट काउंट कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, द स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग द स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज गिवन फॉर मी 0.001 centimeter. The main scale reading is your 5 mm and the zero of the circular scale coincides with the 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error of your 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball will be equal to how much? यानी रीडिंग निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, रीडिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर पिच, यानी मेन स्केल रीडिंग जो जितना देगा वो वाला, प्लस ऑफ योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग मैंने बताया था मतलब क्या, लीस्ट काउंट इंटू योर कोइंसाइडिंग डिविजन लिखना है। मेन स्केल डिवीजन कितना है मेरे पास 5 mm, प्लस लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर into your, कितने से coincide हो रहा है, 25 से 25 हो रहा है, so that will be 25. So this will be equal to 5 mm plus of your, this will be 0.001 into 25 यानी 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा। So पॉइंट ये सेंटीमीटर में mm में पता, दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो 5 mm को आप कन्वर्ट करना पड़ता, so it will be 0.5 सेंटीमीटर्स में लिख लो प्लस 0.025 सेंटीमीटर, so that will come out for me 0.525 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें क्लियर, दिस इज योर रीडिंग। अब एरर भी दे रखा है, तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगा राइट नाउ फॉर, ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल टू, ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल टू योर वॉट एवर द रीडिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड, द रीडिंग माइनस ऑफ योर जीरो एरर, isn't it, with sign लिखना है बेटा, जीरो एरर with your sign लिखना है, यानी दिस वैल्यू विल बी 0.525, ये हो गया माइनस जीरो एरर माइनस ऑफ 0.004, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, जीरो को जीरो ऐड हो जाएगा प्लस 5 0 is nothing but 5, 2 0 is right now for me 2, 5 plus 4 that will be equal to 9, so 0.529 आया सभी को। चलिए, आज भी मेकिंग वन सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बेटा, इसके अंदर जो पूरा क्लासेस के अपडेट्स वगैरह देंगे, असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, एवरी टाइम आप लोग का असाइनमेंट्स नोट्स भेजना मुश्किल हो रहा है, तो मे बी बाय टुमारो आई टेक वन वेबिनार, कल हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे क्या प्रोग्राम होगा, कैसा होगा इफेक्टिवली फ्रॉम मंडे, एंड रिवीजन कैसा करना है, कितने ग्रैंड टेस्ट वगैरह करना है, कौन सा टाइम करना है, वो कल संडे के दिन एक 1 आवर अपना एक वेबिनार रहेगा, उसके अंदर विल हैव टेक द ओपिनियंस ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड एक कॉमन टाइम लगा के विल स्टार्ट द रिवीजन, इधर सेकंड ईयर का रिवीजन करना है या फर्स्ट ईयर का रिवीजन स्टार्ट करना है, एंड ग्रैंड टेस्ट हम लोग कब से करना है ये पूरा करेंगे, विल ट्राई टू टॉक अबाउट ऑल दिस इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ए क्लास। मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक टीपीपी सेशन भेजा था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन गॉन थ्रू दैट वन, गुड असाइनमेंट्स आप लोग को भेजा था मैंने। यूनिट्स एंड डायमेंशंस रिविजन बोल के भेजा था, मिला किसी को, वो पूरा असाइनमेंट करना है बेटा। ये निकालना मुश्किल है बेटा, वो इंडिविजुअल कीज नहीं है मेरे पास। यूनिट्स एंड डायमेंशंस रिवीजन का मैंने एक असाइनमेंट भेजा था, आप लोग को मिला या नहीं मिला मुझे पता नहीं, मैं भी आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी टाइम, 2 मिनट टाइम दीजिए।
ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी को हर एक क्वेश्चन करना है 1 से 2 बार विदाउट कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट. डोंट ट्राई टू जंप फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. नहीं आया तो रिफर करो करो, लेकिन कंपलसरी ट्राई करो. कंपलसरी आप लोगों को करना है. विदाउट डूइंग दैट वन इट इज रियली वेरी हार्ड फॉर मी टू जंप इट आउट. दिस आर सम 83 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है. 1 से 2 बार तो आपको ये वाले क्वेश्चंस कंपलसरी करना ही करना है. तो फर्स्ट 5-10 क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी कर लेंगे. चलो आंसर्स बताइए मुझे. Tick for the correct or incorrect statement in the given boxes. Unit of the measurement is a well-defined quantity. Unit of measurement must be adopted universally by conventional or by a law. Unit must be easily and accurately reproducible. Unit for the measurement must be too large. क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है? आप लोग बोलो, मैं इसके साथ टिक करते चले जाऊंगा. Unit of measurement is a well-defined quantity. Correct. Unit of the measurement must be adopted universally by convention or by law. A B correct है. Unit must be easily and accurately be reproducible. This is also correct. Isn't it? Unit of measurement must be too large. No. Unit of measurement अगर too large हो गया तो conversion नहीं होगा basically. This last statement is wrong for me. Next way देखिए. Let x is the numeric value of a physical quantity when it is compared to unit u. Then the correct relation is, याद है ना आप लोग को basically relation बताइए. X by u is a constant, x into u is constant, x by u square is constant. शेयर हो रहा है क्या? अभी शेयर हो रहा है? चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो बेटा. टेक करेक्ट और रॉन्ग फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस. Unit of the measurement is a well-defined quantity. That is correct, beta. Unit of measurement must be adopted universally by conventional law or by law. That is also correct. Unit must be easily and accurately reproducible. That is also correct. Unit for the measurement must be, it's not large, it should be very small. So it is a wrong. The second one देखिए, x is a numeric value of a physical quantity when it is compared to the unit. याद है ना आप लोगों को, n into u must be equal to your constant. So मतलब x into u will be equal to constant. Second option will be the correct. Third one. A limited number of units are being needed to express all physical quantities. Reason, physical quantities are interrelated with one another. Assertion and reason दोनों correct है या wrong है बताइए कोई. Limited number of units are needed to express in all physical quantities. Assertion is right now for me. Assertion is right now for me. Correct. Reason, physical quantities are interrelated with one another. Reason is also correct. And reason must be correct explanation for your A, obviously. क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड रहेंगे तो ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. चलो फोर्थ वन देखो. मैच द टर्म्स इन द कॉलम 1 विद द टर्म्स इन योर कॉलम 2. फंडामेंटल क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स. फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या? बेस यूनिट 3. कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स मतलब क्या? डिराइव्ड यूनिट्स. कंप्लीट सेट ऑफ योर यूनिट्स मतलब सिस्टम ऑफ योर यूनिट्स. सी विल कम फॉर योर. ठीक है. नेक्स्ट वन. The unit of the plane angle is dash with a symbol dash and the unit of the solid angle is dash with a symbol of your dash. किसी को याद है? Unit of the plane angle किस में मेजर करते हैं बेटा? रेडियंस में मेजर करते हैं. स्कूल से तो पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली. इसका सिंबल क्या हो जाएगा? RAD लिखेंगे. यूनिट ऑफ दिस सॉलिड एंगल किस में मेजर करते हैं बेटा? वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर आता है स्टेरिडियन, isn't it? Steradian, and unit is represented by SR. ठीक है ना? Which of the following pair is correctly matched? Plane angle, partial angle. Plane angle मतलब 2 dimension बेटा. Pair is correct. ये 3 dimension होगा, ये correct नहीं होगा. So the first one must be the plane angle. ये लिखेंगे. Match the following. ये तो आप लोग पता ही होगा. Match the fundamental quantity given in the column 1 with column 2. Length मतलब right now for me 7. So A के लिए क्या हो जाएगा? 7. B के लिए mass. Mass is been represented by your kg 6. And time is represented with your seconds. That means this will be 5. Electric current is measured with your ampere. Electric current मतलब D. D को क्या represent करेंगे बेटा अपन? A ampere से. That is nothing but 4. Then E, temperature. Temperature is measured with Kelvin, and this will be equal to 3. Amount of substance मतलब mole. That will be equal to 2. Luminous intensity मतलब Candle law. That is nothing but equal to 1. उल्टा है देखो. 1 2 3 4. अच्छा उसका 5 6 7 8. क्लियर है? वैसे वाले थोड़े क्वेश्चन है इसके अंदर.
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आईपी के अंदर या आपको एनसीईआरटी में भी है, बेसिकली ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिए एक बार। To measure the distance of the planet using the parallax method, ये जनरली बच्चे मिस करते हैं, ये आईपी इसमें एनसीईआरटी में रखा हुआ है तो सर क्लियरली। To measure the distance of a planet using the parallax method, distance of the planet is usually very large with respect to diameter of the planet. The reason for smaller value of the paraxial angle means the lesser distance of the your planet part relation. क्या होगा बताइए? Paraxial method is being used to measure the distance of the planet. That is correct, beta. The distance of the planet is usually very large with respect to the diameter of the planet. So assertion is correct. For smaller values of the paraxial angle means a lesser distance of the planet. That is wrong. Smaller angle मतलब क्या होगा? बहुत दूर है उसलिए angle बहुत छोटी हो जाएगी. So ये is true, but reason is false one. C will be the answer. ये वाले भी पूरे करना है. ये वाला भी बच्चे मिक्स करते हैं बेटा. Match the items in the column 1 with their values in the column 2. ये बता दिया 35. Match the type of the errors in the column 1 with their with their causes in the column 2. Can anyone give me the answers for this one? Instrumental error, imperfection in the experimental technique, personal errors, systematic errors. Instrumental errors क्या हो जाएगा बेटा? एक ही डायरेक्शन में होगा. ये must be equal to 3. Imperfection error मतलब like temperature, humidity वगैरह होगा ना, that will be the responsible. Personal errors मतलब individual carelessness, तो डायरेक्टली मार सकते थे. Systematic errors मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Systematic error is in one direction लिखना चाहिए था शायद. I think first one हम लोग ने wrong क्या किया. First one देखो एक बार क्या, instrumental errors will be equal to because of your imperfection designs. So this will be the best option. And systematic errors will be in one particular direction. ये match होना चाहिए. हो गया? हाँ. (43) का आंसर बताइए बेटा. Consider screw gauge shown with the fully closed jaws. ये क्या हो जाएगा बताइए? If A in A first diagram, zero error is positive or negative, and B is zero error is positive or negative. बताइए. तो सर्कुलर स्केल का जीरो जो है ना ऊपर है. सर्कुलर स्केल का जीरो जो है ऊपर है. दैट मींस इट विल बी इक्वल टू योर नेगेटिव. और सर्कुलर स्केल का नीचे है, दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है ना? अभी बताया था मैंने. ये वाले भी मेन डायरेक्शन क्वेश्चन है बेसिकली. ये वाला देखिए एक बार. 51 को ट्राई कर सकता है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 51. Match the operations given in the column 1 with your error in the column 2. Z is equals to your A plus B. Z is equals to your A plus B. क्या हो जाएगा? 1 is matching with your 4. ठीक है ना? Z is equals to A by B. मतलब ये वाला प्रोडक्ट हो. Z is equals to A power n, यानी n पहले आना चाहिए बेसिकली, यानी this value will be equal to this one. Z is equals to A power P B power Q, यानी P डेल्टा A पे ये, यानी 2 आना चाहिए. D का 2 हो जाए. ठीक है ना? 53 ट्राई करिए एक बार. The length and breadth of a rectangular sheet have been measured by measuring scale to an accuracy of 0.1 centimeter. The measured values are 35.2 centimeter and 21.7 centimeter respectively. Then find the relative error in the area of your sheet. Relative error का formula क्या हो जाएगा बेटा? Area is equals to length into breadth, and this value will be equal to delta A divided by A is equals to delta L divided by L plus of your delta B divided by your B. So that will be equal to your length के अंदर error कितना है? 0.1. So it is 0.1 divided by this is 35.2 plus this one is 0.1 divided by 21.7. इसको कैलकुलेट करो, जो भी आ रहा that will be the answer for that. ठीक है ना?
55 का आंसर बोल सकता है कोई? ओरल है देखो. If error in the radius is 3%, if error in radius is 3%, then percentage error in the volume of the sphere will be equal to how much? Volume is equals to 4 by 3 pi r cube ना बेटा. Error लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे अपने से को? Percentage error in the volume delta v by v into your 100 is equals to your r cube है ना. So this will be equal to 3 into your delta r by r into your 100. And that will be equal to your 3 into a 3% दे रखा है. And that will come out for me 9%. ठीक है ना? 67 ट्राई करिए बेटा. Each side of the cube is measured to be 7.203 meter. Find the correct matching pair from the given values. Total surface area is 311.29 meter square. Second one, volume is 373.7 meter cube. Short try kariye. Let me see how many of you will give me the answer. What is the surface area of cube? Anyone? Surface area of the cube. Surface area of the cube. सिक्स ए स्क्वायर होगा ना बेटा सरफेस एरिया क्यूब के लिए. Surface area is equals to 6 times of a square. And this value will become for me 6 into this is 7.203 का होल स्क्वायर लिखना है. ये चेक कर लो कितना आ रहा. वॉल्यूम मतलब कितना बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू डायरेक्टली आपका ए क्यूब एंड इट इज 7.203 होल क्यूब. ये देख लीजिए कितना आ रहा. सो व्हाटएवर दैट विल गिव मी द आंसर. ठीक है ना? 70 रखिए एक बार. Find the value of 12.9 gram minus 7.06 gram in correct significant figures. Subtraction. Smallest number of decimal place should be retained by the याद रखना है. 12.9 minus 7.06 कितना आएगा? इसको मैं subtract कर रहा हूँ. So this will be approximately 5.84 grams. Is that it? The number of significant figures कितने हैं basically? Smallest number of decimal places should be maintained. Decimal के बाद कितने significant figures है? 1. यानी the answer will be equal to how much? 5.8. That 71. Ratio of significant figures in 4500 and 0.0045. 4500 में number of significant figures कितने होंगे बेटा? 2. 0.00 decimal के बाद का 0 will be insignificant. तो इसका भी 2 यानी 2/2 इसका रेशियो पूछ रहा है. That is equals to 1. Clear? 73 भी करना है. 74 का आंसर बताइए. The pair of physical quantities are given below. Find the odd one out. Volumetric strain and coefficient of friction, disintegration constant of radioactive substance and frequency of light wave, heat capacity and gravitational potential, Stephen's constant and Wien's constant. Volumetric strain and coefficient of friction, the one and the same. Odd one पूछ रहा है बेटा. Disintegration constant frequency, this one is odd दिख रहा है मुझे. Heat capacity and gravitational potential, Stephen's constant and as well as of your Wien's constant. Stephen's constant and gravitation, ये odd है. ये तो correct ही है बेटा. ये नहीं होगा. ठीक है ना? और हीट कैपेसिटी ग्रेविटेशन का हीट का स्टीफेंस कांस्टेंट एंड विंस कांस्टेंट. स्टीफेंस कांस्टेंट एंड विंस कांस्टेंट ये भी ऑड है क्या? तो 74. ये वाले तो कर सकते हैं आप लोग. ये वाले भी एक बार ट्राई कर लीजिए. Yeah, this all you can do it out.
84 देखो बेटा, एक बार ट्राई करो। In a particular system, unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. Unit of the force in the system will be equal to how much? Try करो बेटा इसको एक बार. That is also a good question. एक बार try करो कंपल्सरी. 86 तो आप कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, इसको पूरा एक बार कंपल्सरी कंप्लीट कर लो. Tomorrow we'll have one webinar. I'll tell you the timings. Same timing में से 9:45 PM को ही we'll have a small discussion कि हम लोग को next further कैसा प्रोग्राम करना है. And पहले 80 मार्क्स का टारगेट है बेटा मेरा, तो फर्स्ट विल ट्राई टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर दैट 80 मार्क्स. कितने बार हम लोग रिवीजन रखना है और कौन से टॉपिक हम लोग स्किप कर सकते हैं, ये पूरा डिस्कशन हम लोग कल इवनिंग 9:45 को आएंगे. आई गिव यू ऑप्शन टू इवन टू स्पीक टू यू. तो आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी और भी है तो उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन कर दीजिए. जल्द जो भी स्टूडेंट्स वेबिनार में पैनल होंगे और जो भी नाम देंगे दोनों को मैं सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा. पासवर्ड और Zoom ID भी पूरे चेंज हो जाएंगे फ्रॉम मंडे. All the students who will be joining the webinar, for them only I'll include into the WhatsApp group and all the updates and notes और जो भी है उसके अंदर ही हम लोग डिस्कशन करें. ठीक है ना. And first we will be trying to see that अपना 80 to 120 मार्क्स का टारगेट हो जाए. We'll try to reach that one. उसके बाद अगर आपका बायो में 340 350 आ रहा, केमिस्ट्री में 150 आ रहा, then we'll try to see for the other set of students who are aiming to cross 150s and 180s. अगर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 120 के अबव, तो उन लोगों का एक सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे. 120 180 जो लाना चाह रहे हैं, 140 के ऊपर जाना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए थोड़ा और फास्ट रिवीजन और थोड़े हायर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स विद फास्टर कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है. सो टुमारो 9:45 विल मेक वन वेबिनार कि व्हाट टू प्लान और हाउ टू प्लान द कंप्लीट दिसंबर मंथ हम लोग कैसे प्लान करें, कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करें और कितने बार कोई टॉपिक रिवीजन कर लें. ठीक है ना. और आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल्स को बोल दीजिए ज्वाइन जितने भी हो सकते हैं उतने 100 स्टूडेंट्स तक तो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि पेड वर्जन है. विल ट्राई टू हैव अ डिस्कशन. उसके बाद फ्रॉम मंडे विल ट्राई टू इफेक्टिवली प्लान इट. ठीक है. चलो बाय बेटा.